Hello, good morning friends. Myself JATIN from School and welcome all of you. We are going to continue chapter number 5 arithmetic progression and exercise number 5.3. In previous video we complete the explanation and the calculation of 1 to 15 questions from the exercise number 5.3. Now this is the last video from the exercise and here we discuss two more problem sums. First of all is question number 16 now. Question number 16 says a sum of rupees 700 is to be used to given a 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its the preceding prize, find the value of each the prizes. Okay, question समझ में आ गया आपको? तो फिर से एक बार आपको बता दें, sum of the 700 rupees is to be used to given the 7 cash prizes of the students of a school for their overall academic performance. स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कुल 7 स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 7, उसको यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 7 कैश प्राइजेस देने हैं और इसके लिए टोटल 700 रुपीज फंड है, टोटल 700 रुपीज फंड है. अच्छा, प्राइजेस किस तरह देने हैं? इच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स द प्रेजेंटिंग प्राइस. आगे वाली प्राइस से बाद वाली प्राइस है उसमें 20 रुपीज का डिफरेंस होना चाहिए. दैट मीन्स कि जो फर्स्ट प्राइस है इसके बदले जो सेकंड प्राइज ऑनर है उससे 20 रुपीज कम मिलेंगे एज अ कैश प्राइज में. इस हिसाब को ध्यान में रखते हुए हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइजेस. ऑल 7 प्राइजेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अच्छा, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सम ऑफ ऑल प्राइजेस. यहाँ पर हमें दी है टोटल फंड जो हमारा है, या फिर इसे कहेंगे सम ऑफ द ऑल प्राइजेस. ये है 700 रुपीज. लेट्स द फर्स्ट प्राइज बी ए. जो फर्स्ट प्राइज मिल रहा है इसे हम ए कहेंगे. सेकंड प्राइज इज कॉन्सिक्वेंसली ए माइनस 20. थर्ड प्राइज इज ए माइनस 40. इस तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे एंड दस वी हैव द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए. द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू माइनस 20, क्योंकि हर एक प्राइस प्रीसेडिंग प्राइस से 20 रुपीज लेस रखना है. तो यहाँ पर हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे ए, कॉमन डिफरेंस कंसिडर करेंगे माइनस 20. नाउ नंबर ऑफ प्राइसेस कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जितने, मतलब कि n इज इक्वल टू 7 है. और जो हमें टोटल सम ऑफ द प्राइसेस दिया गया था ये है एक्चुअली द सम ऑफ द 7 स्टूडेंट्स प्राइजेस और ये है S7 is equal to 700. Now we applying the formula of the nth sum of the nth term is Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d, and now putting the value of Sn is equal to 700, a is equal to a, n is equal to 7 and d is equal to minus 20, and then simplify this. So look here, 700 is equal to 7 by 2 into bracket 2a plus 7 minus 1 into minus 20. First of all, 7 minus 1 is equal to 6 and 6 multiplied by minus 20. So 26 are 120 and plus minus minus. So minus 120, 2 into a is equal to 2a, bracket is over. Now look here, 700 is equal to 7 by 2 into bracket. So we divided both the side by 2 by 7 and therefore we get 700 multiplied by 2 divided by 7 equal to 2a plus my under bracket, under small bracket, minus 120. 7 hundreds are 700, so we simplify here. 100 multiplied by 2 is equal to 200 and 200 is equal to 2a minus 120. So finally we get 2a minus 120 is equal to 200. Now minus 120 is transmits to the right hand side and we get 2a is equal to transform to the right hand side and we get 200 plus 120 is equal to 320. Now divide both the side by 2 and finally we get a is equal to 300 by 320 by 2 and we get 160. So a is equal to 160. A is equal to 160 is the first term of our given arithmetic progression. Thus the value of the 7 prizes are
to be 160, second is 160 minus 20, third is 160 minus 40, up to seventh price is 160 minus 120. So this price are 160, 140, 120, 180, 60 and last sell price is 40 rupees. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16. Now we are going to start next question number 19. 200 logs are stacked in the following manners. 200 logs are stacked in the following manners. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. Let's see the figure. So please open your textbook and see the figure from question number 19. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top rows? यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन बता दें शॉर्ट में. तो यहाँ पर 200 लॉग्स हैं. लॉग्स का मतलब है पाइप, पीवीसी पाइप जैसे कि. तो यहाँ पर 200 लॉग्स हैं. इस लॉग को इस तरह से अरेंज किया गया है कि सबसे नीचे वाली जो रो है, बॉटम रो है, इसमें 20 लॉक्स लगाए गए हैं. इसके ऊपर जो नेक्स्ट रो है इसमें 19 लॉक्स लगाए गए. इसके ऊपर थर्ड रो बनाए गए, इसमें 18 लॉक्स लगाए गए. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक लॉक्स लगाते लॉक्स को अरेंज करते जाना है रो में. हमें यहाँ पर दो आंसर देने हैं. सबसे पहला आंसर ये देना है, हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड. यहाँ पर इस तरह से लॉक्स अरेंज करते हुए 20, 19, 18 कितने लॉक्स हम अरेंज कर सकेंगे. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉक्स हैं 200. कितनी रोज फॉर्म होगी. और दूसरा आंसर ये देना है कि सबसे ऊपर टॉप वाली जो रोज है इसमें कितने लॉक्स लगेंगे. ओके, लेट्स सी नाउ. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. वी हैव द नंबर ऑफ लॉक्स. We have the number of locks is first row is equal to 20, second row is equal to 19, third row is equal to 18 and etc etc. तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर हो रहा है वो इस तरह से 20, 19, 18 up to are the arithmetic progression and such that here the first term is equal to 20, common difference is equal to the difference between the two consecutive terms means 19 minus 20 is equal to minus 1 and let the number of rows be n. यहाँ पर जो number of rows consider करनी है इसे हम n कहेंगे. Total the sum of the rows यहाँ पर दी है वो है 200 logs. तो फिर से एक बार यूज करते हैं. Formula of the nth term, the sum of the nth term is equal to Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Now putting the value of Sn is equal to 200, n is equal to n, a is equal to 20 and common difference d is equal to minus 1. So we get 200 is equal to n by 2 into bracket 2 multiplied by 20 plus n minus 1 multiplied by minus 1. Now simplify the bracket. 22s are 40. Minus 1 multiplied by n and we get minus n and minus 1 multiplied by minus 1 minus plus and we get 1 ones are 1. So from the right hand side we get now 2 multiplied by both the side and we get next step 200 multiplied by 2 is equal to n into bracket 40 minus n plus 1. 200 2s are 400 is equal to n into bracket 40 plus 1 41 minus n and now simplify with the terms and open the bracket. Finally we get n square minus 40 1n plus 400 equal to 0 is our quadratic polynomial and we are going to perform factors of the polynomial. We get two factors n minus 16 and n minus 25. Now compare with 0 and we get n minus 16 is equal to 0. That means n is equal to 16 or n minus 25 is equal to 0. Therefore n is equal to 25. इसका मतलब ये हुआ n जो हमारे लिए नंबर ऑफ रोज है. ये आंसर हमें यहाँ पर दो अल्टरनेटिव मिले हैं. फर्स्ट वन n is equal to 16 और सेकंड is n is equal to 25. But tn is equal to 0. If we consider Tn is equal to 0, then a plus n minus 1 into d is equal to 0. Now put the value of here. A is equal to 20 plus n minus 1 into common difference minus 1 equal to 0. And then we get n minus 1 is equal to 20. Therefore,
n is equal to 21 because -1 is transposing to the right hand side, and finally we get n is equal to 20 plus 1, 21. So 21 is the term where number of logs remaining is 0. तो 21 रो ऐसा है कि जहां पर कोई भी लॉग्स बाकी नहीं रहेगा. टोटल नंबर ऑफ ये वो टर्म्स है जहां पर 0 नंबर का लॉग्स लगेगा जो हमारे पास है नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दो अल्टरनेटिव थी n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 25, इसमें से हम n इज इक्वल टू 25 को कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे ये मैंने आपको बताया. फिर से एक बार अच्छी तरह से इसे देख लो. So here 21st term becomes 0, that means n is equal to 25 is not required, and thus we consider number of rows is equal to 16. Therefore now number of rows is equal to 16, that means the 16 is the top row, and therefore we can find out now T16. We can find out T16. T16 is our top row, so therefore put the value once again in the formula of nth term. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Here a is equal to 20, d is equal to minus 1, common difference, and T16 n is equal to 16 here, so we can find T16 is equal to 20 plus 16 minus 1 multiplied by minus 1, and therefore we get 20 plus 16 minus 1, 15 multiplied by minus 1, and plus minus minus 15 ones are 15. So 20 minus 15 is equal to 5. That means T16 is equal to 5 is our second answer. Which answer? How many logs are in the top rows? So here 5 logs are in the top rows, and number of rows are available is n is equal to 16. So dear students, I hope so very well. आपने इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझा होगा. कुछ होमवर्क आज आपके लिए छोड़ रहे हैं इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हुए. एक्सरसाइज 5.3, लुक हियर, लेट्स सी द बोर्ड. एक्सरसाइज 5.3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 और 20 फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 और 20 आपको होमवर्क में डन करना है, कंप्लीट करना है. और यहाँ पर हम 5.3 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर रहे हैं. अब एक एक्सरसाइज बचती है जो नेक्स्ट वीडियो में हम ले जा रहे हैं, और इसके साथ इस लेसन को भी हम कंप्लीट कर देंगे. तो तब तक के लिए इस प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए लास्ट वीडियो और लास्ट एक्सरसाइज के लिए. धन्यवाद एंड बाय.